फाउंटेन पेन के साथ हवाई यात्रा। Air travel with a fountain pen. क्या आप जानते हैं कि हमें हवाई जहाज में यात्रा करते समय अपने साथ फाउंटेन पेन अर्थात स्याही वाला पेन क्यों नहीं रखना चाहिए? चूंकि विमान जमीन से बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, इसलिए विमान के केबिन में हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है, जबकि पेन के अंदर का दबाव बाहर के वातावरण से ज्यादा होता है। ऐसे में पेन की स्याही उसके निब के पास जमा होने लगती है और इस वजह से पेन लीक होने लगता है। नतीजन ये आपकी कमीज और उसकी जेब को खराब कर देता है। यही कारण है कि हमें हवाई जहाज में यात्रा करते समय अपने साथ फाउंटेन पेन अर्थात स्याही वाला पेन नहीं ले जाना चाहिए। The same thing can be expressed in English as follows. Do you know why we should not carry fountain pen, that is ink pen, with us while traveling in an aeroplane? Since the plane flies at a very high altitude from the ground, the air pressure in the cabin of the plane becomes very low, whereas the pressure inside the pen is more than the outside atmosphere. In such a situation, the ink of the pen starts accumulating near its nib, and due to this, the pen starts leaking. As a result, it spoils your shirt and its pocket. This is why we should not carry fountain pens, that is ink pens, with us while traveling in an aeroplane. Thank you all very much. Presentation by Dr. Vibhash Chandra Jha for YouTube channel A1 Thoughts.